Okay, so open page 43 of your books. G, in the last lecture, I was telling you about the skeletal system. So what is the skeletal system? The system, the framework of bones in our body is known as the skeleton. We have studied that skeleton has two functions, okay? I have already told you that skeleton has two functions. Number one, it gives shape and support to our body. Without a skeleton, our body has no shape. It will be deformed. It has no shape. Okay. And how many bones are there in human body? There are 206 bones of different shapes and sizes. How many bones? 206 bones of different shapes and sizes in the body. The bones in the palm, foot, and toe are small in size, and the bones in the legs and arms are long. And the bones are round. Okay. We have already studied about the skeletal system. Okay, now we have studied that the bones are hard from outside. If you just touch a bone, you will feel that it is hard from outside and it is very soft and spongy from the inside. So the inside, the soft, fatty substance inside the bone is called a marrow. So what is the function of marrow we have today? We have to start from marrow. What is marrow? So marrow is the soft, fleshy substance which is found inside a bone is called marrow. The marrow produces, I have already told you, it is a pulpy material. It's very like pulp. Okay? Marrow function is it produces new blood cells. It produces blood cells. So what are blood cells? There are red blood cells, white blood cells, and platelets. So the marrow produces new blood cells. The red blood cells carry oxygen to all parts of the body, and the white blood cells fight infection. Bones also store minerals. Bones जो है वो क्या store करते हैं? Minerals भी store करते हैं. So red blood cells carry oxygen. आपको पता है red blood cells का क्या function है? It transports oxygen to every part of the body, and the white blood cells they fight against diseases, against infection. And bones also store minerals. Okay, minerals are also found in the bones. Okay, now you know we have to do. Now you know. G. Now you know me. Name the following, which we have studied in the last lecture. We have to name it. In this lecture, we have to name it. Any two internal organs. Okay, can any of you answer this blank? Raise your hands. Zebra. Yes, Zebra. Well, teacher, heart and lungs. Yes, heart and lungs. Good. You can write any two internal organs, like there are many organs, heart, lungs, kidneys. So you can write a name of any organ. Okay, yes, like you can write heart and lungs. It's easy. So you can write heart and lungs. Okay, write in the first blank heart and after comma lungs. Two systems which work closely together to make movement of the body possible. अब हमारी body की जो movement है, that is because of the two systems जिसकी वजह से हमारी body move करती है. What are the two systems? G, who will answer my question? Raise your hands. Yes. Two systems which work closely together to make movement of the body possible. Yes, Marij, can you answer? One is we are just studying one system. Which kind of system we are studying?
Yes, Manoj. Okay, Ibra, you can tell me which system we are studying. Teacher, musculatory system. Muscular system as well as what we are Muscular. what we are studying now. अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा system पढ़ रहे हैं? About what? Skeletal system. Skeletal system. Yes, good. So these two systems make movement of the body possible. So because of these two systems, we can move. So these two systems make movement of the body possible. So one is skeletal system and the next is muscular system. Now two body parts with small bones. I've already told you now at the start of this lecture that there are body parts which have small bones. So which are having the small bones? Yes, then Roy and foot. yes, foot and you have to write Toe. any two. Toe. Foot and toe. Two body parts which are foot and toe. And you can also write palm, ठीक है, fingers, ये भी लिख सकते हैं आप. सब में क्या होती है? Small bones. All of them are having small bones. Okay, the soft fatty substance inside hollow bones which makes new blood cells. अब जो soft fatty substance है inside bones which make blood cells. अभी मैंने आपको बताया है वो just I have told you. Anyone else can tell? Miss, marrow Please, Anna. and minerals. Marrow. It's just marrow. Marrow and minerals. नहीं marrow वो आपकी एक एक्स्ट्रा ब्लैंक लगी हुई है यहाँ पे it's just one blank answer. It's marrow. The soft fatty substance inside hollow bones which makes new blood cells is marrow. ठीक है? Just ignore the second line. You have to write the answer in the first line. It's marrow. G students, so have you done now? You know, now we have to start today from parts of the skeleton. Parts of the skeleton, now we are just studying which system? We are studying skeletal system. We are studying Teacher, skeletal मुझे system. फर्स्ट और थर्ड वाला नहीं मिला. Which one? First and First. third. First, like any two internal organs, you can write name of any two internal organs. Like you can write lungs, you can write heart, you can write kidney. जो भी आप लिख लें इन दो blanks से, you can write any two internal organs. टीचर आप कौन सा काम करवा रही हैं? Open page 44 of your books. Now you know. Then two body parts with small bones, you will write foot and toe. Okay, foot and toe. Okay, now student, be attentive. We are going to start from parts of the skeleton today. Parts of the skeleton अब हमने पढ़ना है कि जैसे एक skeleton है, what is its function? Its function is to protect our internal organs, and basic function is to basic function is to give support and shape to our body. So these two functions are performed by the skeleton. Now the human bones can be put into following four major groups. अब four major groups हैं. अगर आप लोगों को now you know blanks में problem है तो मैं एक दफा repeat कर देती हूँ. अगर किसी ने नहीं कोई blank छोड़ी है या नहीं लिखी तो they can just write it again. Okay? Any two internal organs: heart, lungs. Heart and lungs. Two systems which work closely together to make movement of the body possible: muscular or skeletal. ठीक है? Skeletal, S-K-E-L-E-T-A-L, skeletal, and muscular, M-U-S-C-U-L-A-R. Two body parts with small bones: foot, toe. Foot, toe. And the last blank is marrow, M-A-R-R-O-W. Marrow. The last blank is marrow. ठीक है students, so now hurry up, we have to start from parts of the skeleton.
जी, पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन से अब हमने आज पढ़ना है। ह्यूमन बोन्स कैन बी पुट इनटू फॉलोइंग 4 मेजर ग्रुप्स। ह्यूमन बोन्स जो हैं they can be classified into 4 major groups. Like number 1 is skull bones, rib cage, backbone, limb bones, and girdles. So we have to start from the first, that is skull bones. Now the first one is skull bones. Students, don't unmute yourself. G. The skull bones. The normal adult skull is made up of 22 bones. Okay, what is skull? The part of the body which is having brain inside is called skull. All our face and head together forms the skull. Skull कौन सा part है हमारी body का? The uppermost part of our body which is having the face and the brain is called the skull. ठीक है? They make up the skull. A normal adult skull जो है, it is made up of how many bones? 22 bones. Underline. Normal adult skull is made up of 22 bones. You have to remember these. These are very important for your objective. That normal adult skull is made up of 22 bones. ठीक है? Normal adult skull के जो skull होता है उसमें कितनी bones होती हैं? 22 bones होती हैं. 8 flat bones fused to form the brain case. और हमारी जो ब्रेन केस है, मींस जो हमारे ब्रेन है, उसमें कितनी बोन्स होती हैं? 8 फ्लैट बोन्स होती हैं. एंड दे फ्यूज टू फॉर्म द ब्रेन केस. जब वो 8 फ्लैट बोन्स मिलती है तो क्या बनता है? ब्रेन केस. दे प्रोटेक्ट द ब्रेन. ठीक है? ये जो हमारे जो स्कल, ये क्या किस चीज को प्रोटेक्ट करते हैं? हमारे कौन से इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं? इट प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन. And how many bones we have? We have total 22 bones. So the 8 flat bones, they protect the brain, and the other 14 bones, they support the face. जो हमारा face है, यानी ये वाला जो part है, इसको कौन support करता है? The other 14 bones support the face. ठीक है? ये इसको, इस part को जो है, बाकी की 14 bones जो बचती हैं, support the face. 8 bones support the brain. Understand? 8 bones support the brain and 14 bones support the face. अब आपको पता है कि स्कल में हमारी कोई बोन मूवेबल है? क्या आप अपनी कोई बोन हिला सकते हैं? नो, वी कैन नॉट मूव एनी बोन. फेस में, स्कल में, टुगेदर विद द ब्रेन, जो हमारी मूवेबल बोन है, द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल इज द लोअर जॉ. वो कौन सी है? लोअर जॉ. जॉ क्या है? This one. ये जो निचला पार्ट होता है ना आपके फेस का, the lower part of your face, that is called the lower jaw. ये क्या कराता है? lower jaw. Means you can move your lower jaw. आप लोग करके देख सकते हैं. You can move your lower jaw, लेकिन आप अपना upper jaw move नहीं कर सकते. अगर आप जो आपके जो teeth ऊपर वाले हिस्से में अटैच है, आप उस पार्ट को मूव नहीं कर सकते. You cannot move that part, but you can move your lower part, where the lower part where the lower teeth are attached. You can move that part, but you cannot move your upper part. So the lower jaw is the only movable bone in the skull. It helps us to eat and talk. अब अगर हमारे मुंह में ये भी जॉ मूवेबल नहीं होता, मींस लोअर जॉ भी अगर मूवेबल नहीं होता, तो हम ना बोल सकते हैं, ना हम खा सकते हैं, ना हम मुंह खोल सकते हैं. We can not even open our mouth. क्योंकि जाहिर सी बात है, हमारे जो जॉ है वो मूवेबल ही नहीं होगा. एंड इफ आवर जॉ इज नॉट मूवेबल, देन हाउ कैन वी ईट, हाउ कैन वी टॉक? फिर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना. सो दैट्स व्हाई आवर लोअर जॉ मींस दिस वन. आप लोग करके देख सकते हैं. दिस वन इज मूवेबल जॉ एंड यू कैन ईट, यू कैन टॉक विद द हेल्प ऑफ दिस जॉ. द जॉ बोन्स बेयर टीथ. अब हमारे जो है टीथ कहाँ पे होते हैं? जॉस में होते हैं ना. जब कभी अगर आप बहुत ज्यादा बोल लेते हैं, ये बहुत ज्यादा, अगर आप आप जो है समटाइम्स यू फेल टायर्ड आफ्टर टॉकिंग टू मच, आप एकदम से जो है वो टायर्ड हो जाते हैं, मींस थके थके हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि आपकी जो है वो ये चीज
क्योंकि इसमें आपकी जो है वो टीथ है ना, तो ये जो है आपकी मतलब ये समटाइम्स यू स्पीक टू मच, यू फेल्ट टायर्ड, क्योंकि आपकी जॉस जो है वो टायर्ड हो जाते हैं, वो थक जाते हैं, बिकॉज आपका वन जॉ जो है मूवेबल है ना, दैट्स व्हाई योर ओनली लोअर जॉ इज मूवेबल. सो बट रिमेंबर टीथ आर नॉट बोन्स, लेकिन टीथ बोन्स नहीं होती, ठीक है, टीथ बोन्स नहीं. इब्रा आपका कैमरा जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसको करेक्ट करें. बट रिमेंबर टीथ आर नॉट बोन्स, टीथ जो है वो बोन्स नहीं होती, ठीक है. सो बैकबोन और स्पाइन, द नेक्स्ट. ओके, दीज आर द स्कल बोन्स. अभी हमने जो पढ़ी है ये क्या है, स्कल बोन्स. स्कल बोन्स में हमने क्या पढ़ी कि देयर आर 8 bones that used to form the brain case. यानी हमारे ब्रेन में कितनी बोन्स है, 8 बोन्स है. एंड देयर आर 14 बोन्स इन आवर फेस. हमारे फेस में कितनी बोन्स है, 14 बोन्स है. एंड these bones support our face. And which bone is movable in the skull? सिर्फ एक बोन स्कल में, सिर्फ एक बोन मूवेबल है. only one bone is movable in the skull, and that is the lower jaw. That one is the lower jaw. So it helps us to eat and talk. The jaw bones bear teeth, but teeth are not bones. Teeth bones nahi hai. Underline, teeth are not bones. Okay, next is backbone or spine. अब backbone और spine जो है, backbone और spine ये आपको नजर आ रही है. It is extending downward from our neck region. Back, it is extending downward. ये पीछे की तरफ जो है वो जा रही है. And it is extending from our neck. कहाँ से स्टार्ट हो रही है ये? It is starting from our neck. और कहाँ तक जा रही है ये? हमारे जो है वो till here. बैकबोन जो है ये आपको नजर आ रही है till here. ये हमारी बैकबोन है, ये बैक की तरफ से होती है, ये नेक रीजन से स्टार्ट होती है और यहाँ तक जहाँ तक आपको नजर आ रही है ना ये वर्टिब्राई, यहाँ तक ये मौजूद होती है, ठीक है. व्हाट डज इट डू? बेटा बैकबोन जो है, दिस इज द मेजर बोन ऑफ आवर बॉडी. बैकबोन इज द मेजर बोन ऑफ आवर बॉडी. यानी बैकबोन के जरिए ही वी कैन स्टैंड, वी कैन वॉक, वी कैन मूव, वी कैन जंप, वी कैन रन बिकॉज ऑफ द बैकबोन. Without a backbone, we cannot do any kind of running, movement. We cannot do. ठीक है, हम बैकबोन के बगैर हम हमारी जो इरेक्ट पोजीशन है, जो स्ट्रेट पोजीशन है, इस वजह से बैकबोन की वजह से. Without a backbone, we cannot stand straight. So backbone is the major part of our body. And उसके अलावा उन्होंने जो है वो आपको क्या बताने हैं कि बैकबोन, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइन. This is also known as vertebral column and this is also called spinal. Vertebral column भी है और spinal cord भी ये कहलाती है, लेकिन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है, ठीक है. डिफरेंस जो है वो भी हम इसका स्टडी कर लेंगे. पहले हम देख लेते हैं. The skull is attached to the backbone at its base. ये देखिए जहाँ पर ये स्कल खत्म हो रहा है ना, ये इसकी बेस है. Can you see the skull? ये स्कल की जो बेस है, यहाँ से इसके नीचे से क्या स्टार्ट हो रही है, बैक. At the base of the skull is starting the backbone. The backbone forms the main axis of the body. अब backbone जो है ये body का main axis बना रहा है, ठीक है. It is forming the main axis of the body. Main axis body का जो है वो कौन बना रहा है, backbone. So, but it is not made up of a single long bone. लेकिन क्या आपको लगता है कि ये कोई एक ही बोन है तक जा रही है? नो, इट इज नॉट मेड अप ऑफ अ सिंगल बोन, ठीक है. इसकी कोई सिंगल लॉन्ग बोन नहीं है, बट इट इज मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ 33 स्मॉल बोन्स. ये अब आपको नजर आ रही है, ये 33 स्मॉल बोन्स है. ये हर बोन, हर स्मॉल बोन जो है वो दूसरी वाली बोन्स के साथ अटैच है. स्टूडेंट्स, सम ऑफ यू आर नॉट गिविंग अटेंशन. बी अटेंटिव, ध्यान से सुनिए. Okay, the backbone, it is forming the main axis of the body, but it is not made up of a single bone. It consists of 33 small bones. ये जो यहाँ से लेके नीचे तक जा रही है ना, it is not a single bone. It is made up of 33 small bones. कितनी
bones होती हैं, 33 small bones होती हैं, and each of these bones is called a vertebra. It means how many vertebrae are in the singular, plural is vertebrae and singular is vertebra. अगर आप एक bone की बात करेंगे तो it will be vertebra, और अगर आप प्लूरल में यानी आप एक से ज्यादा की बात करेंगे तो it will be vertebrae. So each of these bones is called a, यानी कि we have 33 vertebrae in our backbone. हमारी backbone में कितनी vertebrae होती है? 33. Therefore the backbone is also known as the vertebral column. अब आपको समझ में आई कि हम backbone को vertebral column क्यों कहते हैं? Because it consists of 33 vertebrae. That's why it is also called vertebral column. ये vertebral column क्यों कहलाता है? Because it is consisting of 33 vertebrae. ये आपको नजर आ रही है? These are the, this one, a single bone is attached to the next bone, and the second one to the third one, and the third one. इस तरीके से ये सारी bones आपस में क्या हुई है? Attached. तो total ये कितनी है? How many are they? They are 33. How many? 33 bones. So ये 33 bones जो हैं, these are attached, ठीक है? And therefore the backbone is also known as the vertebral column. इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? Vertebral column. The vertebral column protects the spinal cord, which is a bundle of nerves that extend downwards from the brain. अब इसमें vertebral column के अंदर जो है, backbone तो simple word है ना, backbone और spine. Backbone का क्या मतलब है कि हमारी back पे जो bone है, these bones हैं, that is called a back. हमने उसको एक name दिया हुआ है backbone का, because it is extending from our neck, from the back of our neck. तो इसलिए हमने उसको नाम दिया हुआ है back. अब vertebral column वो क्यों कहलाती है वो मैंने आपको बता दिया, because it consists of 33 vertebrae. That's why it is called vertebral column. और फिर अब spinal cord क्या है? Spinal cord जो है, it is inside the vertebral column. Vertebral column के अंदर क्या है? Spinal cord है, it is having nerves. Spinal cord is a bundle of nerves. Spinal cord में क्या होती है? Nerves होती है. Spinal cord consists of nerves. So, and the nerves, also spinal cord is a bundle of nerves, and it is also extending from the brain. जो spinal cord है, उसमें nerves कहाँ से आ रही है? Brain से आ रही है, और brain से आ रही है, and downwards जो है वो जा रही है, मतलब to all parts of the body. वो जो nerves हैं वो सारी body के parts में जाती हैं, ठीक है? So spinal cord is basically a bundle of nerve and is extending from the brain. वो nerves कहाँ से आ रही है? Brain से आ रही है, it is extending downwards towards the body. So this is the difference between the vertebral column and the spinal cord. Underline, the backbone is also known as the vertebral column, because it is, the backbone is composed of 33 vertebrae. That's why it is also known as vertebral column. And the vertebral column protects the spinal cord. What is spinal cord? Which is a bundle of nerves that extend downwards from the brain. Spinal cord क्या है? A bundle of nerves, and it is extending downwards from the brain. ठीक है, ये जो है ये brain से नीचे की तरफ आ रही है, extend करी downwards from the brain. So, do you understand? Yes, anyone tell me about what is meant by backbone or spine or vertebral column? Who will tell me? Raise your hands. G Maris. Your backbone is attached from the skull. The backbone is the axis of the body, and it consists of a series of 33 small bones, and the backbone is known as vertebral column, and Okay, why backbone is called a vertebral column? Who will tell me? Two vertebral columns there are here. Main reason क्या है? Yes. Okay, I will tell you. Each of these bones is called a vertebra. अब हर bone जो है वो क्या कहलाती है? Vertebra. इसीलिए हम backbone को
three small bones, and each of these bones is called a vertebra. Okay, therefore the backbone is also known as the vertebra. Okay, what is meant by the spinal cord? Now, who will tell me about the spinal cord? What is spinal cord? Miss, it is a bundle of nerves that downwards the brain. Zebra, can you tell? Unmute yourself. Joe, what do I have to tell? What is meant by spinal cord? I don't really know how to explain. Okay, I will tell again. Spinal cord is a network of nerves, and it is coming from the brain. The nerves are extending downward from the brain towards the body. नर्व्स जो है वो आपको पता है कि कहाँ से आ रही है, ब्रेन से आ रही है, और वो जो नर्व्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए पूरी बॉडी में जा रही हैं. मैसेजेस, नर्व्स का अच्छा फंक्शन क्या होता है? नर्व्स कैरीज मैसेजेस. नर्व्स का फंक्शन क्या होता है कि नर्व्स क्या करती है? दे कैरी मैसेज. जो भी मैसेज होता है आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में, वो मैसेज वो कहाँ तक लेके जाती है? टुवर्ड्स द ब्रेन, and with the help of spinal cord. किसकी मदद से लेके जाती है? स्पाइनल कॉर्ड की. मतलब स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए they go into the brain and again they carry message from the brain through the spinal cord towards the whole body. So this is the major function of the spinal cord. अब since the backbone is made up of many small bones, we are able to bend and twist the backbone in different. अगर आप मुझे बताएं कि बैकबोन में ऐसी बोन्स नहीं होती और सिर्फ एक सिंगल बोन होती, तो कैन वी बेंड? तो क्या हमारी बॉडी बेंड कर सकती थी? नो, वी कैन नॉट बेंड बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ओनली अ सिंगल. सिर्फ एक बोन अगर होती तो वी कैन नॉट बेंड और वी कैन नॉट ट्विस्ट. हम अपनी बॉडी को किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते थे, ना ही हम बेंड हो सकते थे. फिर हम बिल्कुल स्ट्रेट ही मतलब हमारी बॉडी होती, इसमें बेंडिंग ना होती. दैट्स व्हाई इट इज मेड अप ऑफ सेपरेट बोन्स. ये सेपरेट बोन्स की क्यों बनी हुई है? सो दैट वी कैन इजीली बेंड, ताकि हम आसानी से बेंड हो सके, ट्विस्ट हो सके, हमारी बॉडी मूव कर सके. सो दैट इज द मेजर रीजन बिहाइंड बेंडिंग. सो डू यू नो, मैं आपको पढ़ रही हूँ, इट्स ऑन द नेक्स्ट पेज. देन वी कैन स्टडी द रिब केज and the about the limb bones in the next lecture. So do you know giraffes have necks which can be as long as 6 feet. But did you know that humans and giraffes have the same number of bones in their necks? अब आपको पता है कि humans में और जिराफ की necks में जो है वो कितनी वो सेम बोन्स होती हैं. They have the same number of bones. जिराफ में भी उतनी ही बोन्स होती हैं जितनी के ह्यूमन बींग्स में होती हैं. जिराफ्स नेक वर्टिब्राई आर जस्ट मच लॉन्गर. लेकिन फर्क ये होता है कि जो जिराफ की नेक में वर्टिब्राई होती हैं वो बहुत लॉन्ग होती हैं. ह्यूमंस की नेक में शॉर्ट होती है, इसलिए हमारी नेक्स भी शॉर्ट होती है. उनकी नेक्स लॉन्ग इसलिए होती है क्योंकि उनकी नेक में जो वर्टिब्राई होती है वो लार्ज होती है, लॉन्ग होती है. दैट्स व्हाई. Okay, so now I'm going to ask you question answers. Okay, okay students, so now yes, who will tell me about skull bones? Firstly, we have to start from skull bones. Okay, how many bones we have studied in this skull? Yes, then can you answer? Ji Zainab. Teacher, आपके सवाल पूछना था.
यार एक सवाल पूछना था। ये पूछे। टीचर क्या कह रहा है? Yes, Zainab, what do you want to ask? ये मैंने कुछ नहीं करना, ये बोल रही थी। Zainab, don't interrupt the class like this. टीचर वो बार बार मुझे तंग करने खुद ही। Yes, Ibra. How many bones are in the skull? 22. 22. 22. Yes, there are 22 bones. And how many bones are in the brain? Who will tell me? 8. Yes, 8. Anyone else? How many bones are in the brain? Yes, Dua. Where? There. Where did the page go? I lost my page. Wait, I lost my page. G Marriage, can you tell me? How many bones are in the face? The normal adult skulls have 22 bones in the skull. How many? 22 bones in the skull. Now, how many in the face? How many bones are in the face? Face में हमारी कितनी bones होती हैं? Yes, Dua, can you answer? Okay, now I'm unmuting all of you. So you need to answer. 14 bones. Yes. G, how many bones are in the face? 14 bones. Yes. 32. 32? 32. 32 bones. 14 bones. Okay. Students, there Teacher, are 14. 32. Teacher. G, Over here it says that teeth are not bones, but then what are teeth then? What are teeth? teeth are not bones. You can So say what they are are- a hard part of body which are used for chewing food, which are used for हाँ. grinding food, but they are basically they are not bones. Bones तो नहीं है ना. Bones तो मतलब हमारी जो है वो like strength provide करने के लिए, support provide करने के लिए. Okay, what is meant by backbone? Will tell me about Yes. backbone. About. Yes, Zainab, do you want to tell me? Sit straight and answer the question. ये आप लोगों की क्लास हो रही है, so be attentive towards the class. जी ज़ैनब, आवाज आ रही है मेरी आपको? आपकी क्लास सही है, आपकी सिस्टर की नहीं है, बैठ के सुनिए करके. If you are not serious in the next class, I will not. आवाज ही नहीं आ रही है. क्या भाई है? जी आ रही है. What is meant by a backbone? टीचर, अगर बैकबोन ना हो तो when backbone is not in our body, we cannot run, we cannot walk. और आप With ये बताएंगे, backbone, how many vertebrae are in backbone? ठीक है? How many vertebrae are in the backbone? कितनी vertebrae पढ़ी आप? Three. How many? 3. 3 bones. We have only 3 vertebrae. यही तो बात है ज़ैनब, you are not attentive. Next time आप ऐसे lecture attend नहीं करें. You have to sit alone and listen carefully. अब रेश ना कर.
पता नहीं आप लोगों ने जो है वो क्या कंसिडर किया हुआ है। जी दुआ, what is meant by vertebral column? Maria, answer the question. Backbone is also called Yes. टीचर तो आपको शायद पीछे से कोई बता रहा है। Okay, Ibra, you can tell what is meant by vertebral column. Okay, students, listen to me. अब teacher. आप लोगों की Yes. vertebral column. हाँ. Okay, students, we have to read till page number 44. Listen, homework आपका जो है ये है कि अभी तक आप लोगों के जो 4 chapters हो गए हैं उसका काम आप Yes. लोगों ने complete करना है। टीचर इस पे अगर किसी का ज़ैनब प्लीज डोंट इंटरप्ट। अगर आप लोगों का काम रहता है तो आप लोगों ने अपना जो है वो कॉपीज पर टीचर कंप्लीट कॉपीज करना कब है, तक मिलेगी? मिल जाएंगी। ठीक है, आप लोगों ने अपना वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये कब तक? भी अब रह गई है वो चेक हो जाएंगी। ओके, यू हैव टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चन आंसर। Judges. टीचर कब तक मिलेंगी फिर? कंप्लीट योर बुक्स। Yeah, I got Jojo Sivan in the background. That's so sick. Sick.